Okay, so I hope my voice is audible and the screen is visible to all of you. Yes, sir. So, Okay, Good afternoon, sir. good afternoon. Okay, so we were discussing about our basic concept of error propagation, and if I if I talk about in summary of our previous discussion in the last class, we were having two cases. One is linear case. We were having two cases. One is the case of linear case, and the second one was the non-linear case. So if you have a function of y is equal to ax plus b, obviously, as I've told you, since we are discussing about the error propagation, we are not interested in the mean value, isn't it? So let us be very clear that mean value is something which can be calculated easily if you have the function with you. But what is more important is how the please remember the notation how I'm writing. I'm not writing the sigma as this. The difference between this sigma and this sigma is simple, that this is a summation notation, okay? And this, the top two bars a little inclined, that becomes the variance codance matrix notation, okay? So this is a standard protocol which you follow, okay? So y sigma yy is equal to a sigma xx a transpose, okay? That's the error propagation for linear case, isn't it? If it is a non-linear case, if it is a y is equal to fx and x being, x1, x2, x3, and so on, xn being a vector, then sigma yy would become Jacobian sigma xx Jacobian transpose. So these are the two popular cases which we need to understand. And at the same time, when you are writing y as fx, okay, and y is also a vector of, let's say, m quantities or n quantities, whatever you have, then you have a function x is also having x1 to xn, then f is also up to 1 to m, whatever it is. So you need to understand that Jacobian will be formed based on the partial derivatives, and I've told you the partial derivative on the right hand side, it will go towards the number of variables, and on the bottom it will go down up to number of functions. So this is a very basic representation. That's how your Jacobian will become, m cross n kind of thing. So this was the summary of our previous discussion. Many of you would not be, taking it very, easily, but as you do the exercises, it will be more or less equal. So any issues with that as of now? Because it is very important that you understand that what is linear case, what is non-linear case, how to linearize it. Let's say if you are having any difficulties in linearization, I'm again explaining it. Please be careful. That let's y is equal to fx is a function. Okay, we know that x is nothing but a vector, x1, x2, x3, xu. Let's say xu is the vector, okay, up to xu there u vector, u variables are there. Then y, you have y1, y2, y3, let's say yn, okay, like that. And in fact the function is also, let's say, having f1, f2, f3 up to fn. So these are the vector representation. We just know what is the individual variable, okay? So how would you linearize it? You first take the initial value. So you take x naught as a linear value. When I say x naught, that means we are talking about x1 naught, x2 naught, x3 naught, and xu naught. So we are taking the initial value of the variable and we are linearizing it. How we are linearizing it? So it becomes y is equal to fx at x is equal to x1. That's how we write our first step, plus del f by del x1, x1 minus x naught. Obviously, this function partial derivative is also
or for a better broader view, you can also write this as a, so all vectors are considered, plus del f by del x2 at x is equal to x naught, x2 minus x naught. So obviously when I say x1 minus x naught, so it will become x1 minus x1 naught, x2 minus x2 naught, like that. Okay, and then we'll write like f, sorry, the y is equal to your function which you try to form as a constant Jacobian of delta x. This Jacobian is nothing but the partial derivatives value, del f1 by del x1, del f1 by del x2, del f1 by del xn, or u. So it will become n cross u. So if it is n cross u, the delta x would be u cross 1. Obviously, it is n cross 1. It becomes n cross 1. So everything is very fairly very easy. But please remember, this Jacobian is nothing but evaluated at x is equal to x naught. This is very important point. That this Jacobian is not simply the derivatives. In fact, the derivative value is computed at initial point. Okay. Any questions or any confusion? Any confusion? So in the last class you were solving the problem. भाई आप लोग देख लीजिए एक बार, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछिए अभी, नहीं तो फिर हम पूछेंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा, फिर आप ये नहीं कह सकते समझ नहीं आया. कोई क्वेश्चन नहीं तो भाई बताइए, आपने लास्ट टाइम जो सॉल्व किया उसका सोल्यूशन बताइए. जो प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस की थी इसी के ऊपर स्टार्टेड है प्रॉब्लम, वो ये वाली प्रॉब्लम, क्या सोल्यूशन आया इसका? बताइए शिवम, बताइए क्या सोल्यूशन है आपका? सर अभी सॉल्व नहीं करा सर. क्यों भाई, क्यों सॉल्व नहीं किया? क्यों नहीं सॉल्व किया भाई? आलोक कुमार, आप बताइए. हेलो. हाँ बताइए बताइए. सिग्मा एक्सपी स्क्वायर इक्वल टू 75.99 एंड सिग्मा वाईपी स्क्वायर इक्वल टू 28.
गड़बड़ा गया कहीं मामला आपका? सर मैंने फोटो सेंड की थी आपको, एक बार चेक कर लो। और कोई जो इनसे इत्तेफाक रखता हो? वैली शेट्टी, आप बताइए। Sir, I too got the same values, but here I have a query that for both the problems of Z1, Z2 in linear case and this trigonometric nonlinear case, we are considering that values variables as uncorrelated, and we assumed it to be zero values for both the matrices of sigma yy and sigma xx. But if we consider like that, at last we are getting 2 by 2 matrices with all the 4 non-zero values in the matrix. But if based on the No. See, please understand. First is the the uncorrelated case you can only consider for your observation, not for the final deliverables. See, final deliverables, it is not in your control. You're just estimating on the basis of the given observation. So for observation, yes, it is very well understood that you can consider it non-correlated, but that doesn't make that your final deliverables would also come as an uncorrelated case. Okay, it may be but possibility that it would be correlated. but sir, my doubt is that at final end, if we based on the equating law of two matrices, we should consider we should equate the corresponding values, sir. So here at the right hand side, we have sigma yy matrix as sigma xp square 0 and 0 sigma yp square, that c and b values are 0. But at the left hand side we had this matrix, and at the right hand side the zero values are not there. So we can't equate here, we can't apply the zero values with the non-zero values equation. Where you are equating, I don't understand. You just have to multiply three matrices. Yes, sir. After multiplying, we will that all thing is equated to sigma yy, the final end answer. Okay. That sigma Then yy matrix is sigma yp square, yxp square, and the b term is 0 and c term is 0. no, it should not be. You cannot put it 0. You just have to put it the sigma xp yp and sigma yp xp. That's it. You cannot put it to 0. That's what I'm Okay, saying. See, that's the that's what only I'm doubt. saying. The left hand side, you just have to write it in an actual form. Okay, sir. Right hand side would give you the values corresponding to these individual components. Only during calculation we should consider it right hand side the zero values. Sigma xx. Yeah, in Uncorrelated. sigma xx only you can have this assumption, that too with the assumption. If it in the Okay. question it is not given, then you cannot consider it. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. But the values which I think it should be coming something. The sigma y square, the sigma xp square should come as near about something 1, and sigma yp square should come near about something 3. It is not coming in your answer, isn't it? Yes, sir. Why? Can you tell me what is your sigma xx? Yes, sir. बताइए. Sir, yeah. So 4,000.0025. Oh, converted to the radians? Yes, no sir. डिग्री में कर दिया था. Nah, that cannot be done. Okay, sir. You on one hand you are talking about SI units. You have chosen 4 in SI unit, isn't it? Yes, sir. Then फिर 00 and 0.0025. सर सेकंड में दिया हुआ था, फिर मिनट में कन्वर्ट कर लिया, वही गलती हो गई है. रेडियन में करना चाहिए था. exactly. Okay, sir. In fact, see, in your Jacobian, once you are estimating something, suppose sine beta,
So sin beta you would be putting as sin 30, isn't it? Or Yes, sir. cos beta you would be putting it as a cos 30. That would become dimensionless. Now, the moment you get the value sin beta sin 30 is 1 by 2. So the moment you get 1 by 2, it would get 0.5. 0.5 become unitless. But the moment you multiply d cos beta, the moment you multiply d, which is distance, which is 200 meter multiplied by cos beta, it would not be unitless. It would be in meters. Yes, sir. You get my Yes, point. sir. So Yes, sir. so the sigma ll also needs to be in appropriate units. And for consistency, you should be working in the SI units. So degree is not your SI unit. You have to convert it to radians. So if degree is not, then how come your seconds, the 3 seconds, which is the error in the beta measurement or theta measurement, could be your so-called SI unit. So it has to be converted into radians. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं? फीस नहीं जमा की हो क्या पूरी? भगत. यस सर. बताइए कैसे चलेगा इसे? आंसर नहीं ला पाया, अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे क्या? क्या किया आपने बताइए? सर अटेंड नहीं किया. क्यों नहीं किया भाई? क्लास क्यों फिर कर रहे हैं? क्लास आने का कोई मकसद होना चाहिए ना. आपका कोई मकसद ही नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मेलिटी के लिए अटेंड करें. जैसे बीटेक आपने 4 साल निपटा दिया, ऐसे एमटेक निपटाना चाहते हैं. देखिए जीवन का एक सत्य है, उससे परिचित हो जाइए. आप 4 साल बाद एमटेक आपको जाहिर सी बात है आउट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं कर रहे होंगे आप लोग. तो रियलिटी यही है जिससे आप लोग को गुजरना पड़ रहा है. तो अभी भी समय है, थोड़ा सुधर जाइए. तो एमटेक में कम से कम उतना एफर्ट कर लीजिए ताकि, क्योंकि अब आपका इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट मोड में चल रहा है एमटेक. जितना आप फीस देते हैं उतना वापस आपको स्टेपेंड मिल जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. फीस धीरे धीरे बढ़ ही रही है. नाउ वी हैव अराउंड मोर देन 1 लाख रुपीज पर ईयर, और इतना ही आपको स्टेपेंड मिल पाता है. तो थोड़ा सा सावधानी से चलिए आप लोग. अगर सब चाहेंगे कि क्लास, मैंने आपको डे 1 में क्या बताया, एमटेक इज नॉट ए course where it is everything will be spoon feed to you. You have to attempt a lot, then the course outcome will be achieved. If only 2 or 3 people are attempting, then the objective is not completed. क्यों भाई शुभम? यस सर. आवाज ही से बता दिया कि तुमने कुछ नहीं किया होगा. क्या किया बताइए? Yes sir. I've got all 3 matrix. I am multiplying it now. अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी इस समय? क्लास तो ट्यूसडे को हो चुकी है. Yes sir. फिर आप लोग सुधरने का नाम ले नहीं रहे. It's very shameful that you are presenting yourself like that. Only one question I have given you.
to attempt it, to see the recording in case you have any doubt. But still, what value you would add to any organization where you will join after PG? Nothing. See, as I've told you, attendance is not mandatory. If you do not want to come, you cannot come. You will have downloading with you. You can just see anytime you want. I will not force you to join the class. Rahul Kumar. Yes, sir. बताइए, have you attempted it or not? सर किया बट सोल्यूशन सर नहीं निकल पा रहा है. मैट्रिक्स सर किया सॉल्व भी किया बट सर नहीं हो पा रहा है कुछ. दिखाइए, शेयर करिए स्क्रीन आपकी. सर रफ पे कर रहा था. सब रफ फेयर जो करते रहते हो, इससे क्या होगा? चलिए, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, करिए. वो अटेम्प्ट करके देखिए क्या वो कर पा रहे हैं क्या. बहुत बेसिक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं. सभी लोग नोट डाउन करिए. मैं फिगर नहीं बनाऊंगा क्योंकि अगर फिगर बन गया तो बहुत आसान हो जाएगा सोल्यूशन. चलिए नोट करिए. I'll not give you much of the time for solving this because it's very basic question. Now question is the vertical angle alpha. I'm just mentioning vertical angle alpha to a point B. Vertical angle alpha to a point B is observed at a point A. As 3 degree. With sigma alpha as plus minus 1 minute. Please focus on the question. Vertical angle alpha from a point A to B is measured as 3 degree with sigma alpha as plus minus 1 minute. The slope distance D from A to B is observed as 1000 feet with sigma D as plus minus 0.05 feet. So one is vertical angle, another is slope distance D from A to B is observed as 1000 feet with sigma D as plus minus 0.05 feet. Now what you need to do, you need to tell me the horizontal distance to that vertical pillar and its standard deviation. Again repeating the question, those who have not understood the question, once again I am repeating. Vertical angle alpha to a topmost point of pillar B is observed at point A as 3 degree with sigma alpha plus minus 1 minute. The slope distance from this point A to the top of the pillar point B
is observed as 1000 feet with sigma d as plus minus 0.05 feet. What you need to do is to compute the horizontal distance to the bottom of the pillar from point A and its standard deviation. Now first you need to do to develop the mathematical model based on the figure which you are thinking that would represent the problem. चलिए भाई एक एक करके सभी लोग पहले फिगर इसको डेवलप करिए. प्रॉब्लम कोई भी हो अगर आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो your brain is so much trained that you would automatically get the mathematical function for it. चलिए प्रवीण बताएंगे. प्रवीण कुमार, क्या फंक्शन बनाया आपने? Yes, sir. तो ये क्या फंक्शन है आपके पास? Right, and draw the figure. आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए. Sir, figure को draw कर. अभिजीत बताइए आप. सर अभी हुआ नहीं है. हेलो. हाँ क्यों नहीं हुआ? इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या है? बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशनशिप आपको डेवलप करके देनी है. नोटबुक है आपके पास कि आप सिर्फ मोबाइल पे सुन रहे हैं? सर है. तो बना के बताइए. आलोक कुमार. यस सर. बना लिया तो हेलो. अभी मत बताइए. अभी अच्छा. बताइए मत. बना लिया है आपने? बस मैं पूछना चाह रहा हूं. यस सर, फंक्शन हो गया सर, डी की वैल्यू भी हो गई. चलो आगे बढ़ो आप. भगत. यस सर. फंक्शन बनाया आपने? यस सर. क्या बनाया? सर एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताना है. नहीं, सिर्फ फंक्शन बताइए. क्या फंक्शन आपने बनाया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का?
अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा इनिशियल पॉइंट प्लस डी साइन थीटा। डी साइन थीटा, थीटा सॉरी तो है ही अल्फा, नहीं। सॉरी अल्फा अल्फा सॉरी। इनिशियल पॉइंट प्लस डी साइन थीटा। सर ओके, मतलब किसको यार, आप क्या बता रहे हो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आपने लग रहा है सुना ही नहीं है जो नई प्रॉब्लम मैंने दी, आप पुरानी प्रॉब्लम पे भी अटके हुए हैं। सुनील कुमार, बताइए। यशोवर्धन यादव, यस सर। बताइए क्या फंक्शन है। सर x इक्वल टू डी कॉस थीटा। x इज इक्वल टू डी कॉस थीटा फंक्शन है आपका, फिर आगे क्या कर रहा है। सर वैल्यू रख के सॉल्व। तो वैल्यू रख के सॉल्व करना, तो आप 10th क्लास में हो गए ना, हमने आपसे क्या पूछा है। हमने आपसे पूछा इसका एरर स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, इसमें एरर बताइए कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकाल रहे हैं आप। सर अभी कर शिवम, बताइए क्या फंक्शन है आपका। क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर कर रहे हैं। एक छोटा सा टेक्नोमेट्रिकल रिलेशनशिप बनाने में आप लोग 20 मिनट ले लेते हैं। This shows your I mean aptitude towards the basic mathematics. राहुल कुमार, आप बताइए क्या पहुंचे आप मैथमेटिकल मॉडल तक। यस सर। आपको भी इतना समय लग रहा है, क्या मैथमेटिकल मॉडल बना आपका। यस सर x नॉट प्लस डी कॉस थीटा एंड y नॉट प्लस डी साइन थीटा। भाई सर आप आगे अल्फा नहीं बढ़ पा रहे हैं, पुरानी प्रॉब्लम नहीं, जो पे भी चल रहे हैं। फंक्शन बता रहा सर, फंक्शन बता रहा था जो बनाया मैथमेटिकल। पिछली बार वाला बता रहे हैं, पिछली प्रॉब्लम नो का। नो सर, इसी का प्रॉब्लम का सर। मैंने तो नहीं बताया इसमें x नॉट y नॉट, इसमें कुछ बताया मैंने x नॉट y नॉट।
कोऑर्डिनेट मैंने पूछा आपसे? नो सर। फिर क्या सुना आपने, क्या ऑब्जर्व किया? तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या एक्स नॉट कहाँ से आ गया। हमने तो कोई एक्स नॉट नहीं दिया आपको। प्रॉब्लम में राहुल बताइए एक्स नॉट कहाँ लिखा हुआ है? सर वैसे मतलब दो इनिशियल पॉइंट सर ए और बी है सर, एक्स नॉट उसमें 0 रह सकते हैं इनिशियल सर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए थीटा भी दिया है और सर स्लोप का लेंथ दिया है। तो सब सर डी कॉस अल्फा एंड डी साइन थीटा है सर। तो हमने आपसे क्या पूछा है? हमें जरा ये बताइए, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या पूछा है, जरा वो बताइए। सर मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनेगा? नहीं, किस चीज फंक्शन का, किस चीज का मैथमेटिकल मॉडल पूछा है मैंने आपसे? सर स्लोप का और सर थीटा का सर। हमने तो नहीं कहा स्लोप का हमने तो कभी पूछा ही नहीं। पूछा क्या हमने आपसे? सुन ही नहीं रहे हैं आप, क्लास में नहीं है आपका अटेंशन। क्यों भाई आलोक, बताइए जरा क्या क्वेश्चन पूछा गया था? सर एक पोल है और हम एक पॉइंट ए पे खड़े हुए हैं और उस पोल का जो टॉप मोस्ट है उसको देख रहे हैं। तो वो जो एंगल बनेगा वो वर्टिकल एंगल अल्फा है और डिस्टेंस पूछा है ए से बी तक, मतलब वो बॉटम ऑफ पोल। ये फिगर है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये वर्टिकल एंगल अल्फा है, ये स्लोप डिस्टेंस डी है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू बॉटम ऑफ द पिलर हमने पूछी। इसमें स्लोप कहाँ से आ गया, साइन अल्फा कहाँ से आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बेसिक इक्वेशन बनेगी, h इज इक्वल टू डी कॉस अल्फा। ये बेसिक आपका मैथमेटिकल मॉडल है। अटेंशन थोड़ा सा दीजिए क्लास में, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप अभी पुरानी वाली प्रॉब्लम पे एक ही क्वेश्चन आपने देख लिया तो आप उसी पे लोग अटके नो हुए आगे बढ़िए। नो सर, फिगर मैंने भी सेम बनाया सर, को लिखा मैंने ऐसे ही है। और सर वाई नॉट एक्स नॉट मैंने लिख देता है बस। कोई नेसेसिटी नहीं, आप किसी एक एग्जांपल बस पे बाउंड मत हो जाइए कि आगे सारे एग्जांपल में आपको एक्स नॉट वाई नॉट लिखना है। नो सर, नो सर, माय फॉल्ट। चलिए इसके आगे बताइए, आपको बताना है सिग्मा एच, क्योंकि एच को फाइंड आउट करना तो 10th लेवल प्रॉब्लम है, बल्कि अब तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो जा रही है। तो हमें एच नहीं बताना है, हमें बताना है सिग्मा एच। सिग्मा एच के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करने पड़ेंगे, बताइए। I don't want to rush in the syllabus actually. See, syllabus फिनिश करके कोई हमें तमगा नहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही केवल क्लास में 2 या 4 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाकी 12-13 लोग सिर्फ पिक्चर देखने आ रहे हैं, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। Everyone has to be serious and attentive, तब जा करके आप थोड़ा बहुत सीख पाएंगे। मैंने आपसे पहले बता दिया, एग्जाम्पल्स वुड बी वेरी बेसिक, वेरी 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 बेसिक, बट योर अप्रोच हैज टू बी कंसिस्टेंट। आपकी अप्रोच प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, यू कैनॉट चेंज द अप्रोच, अप्रोच हैज टू बी सेम। प्रॉब्लम्स
whatever I'm asking in terms of solving, you just need to focus on the approach. First, the moment you have written mathematical model, you should ask yourself, it is a linear model or non-linear model? तो बताइए शिवम, ये लीनियर मॉडल है या नॉन लीनियर मॉडल? लीनियर सर। बताइए, लीनियर मॉडल की क्या डेफिनेशन होती है? पहली शिट्टी, ये कौन सा मॉडल है? लीनियर मॉडल है, नॉन लीनियर मॉडल है? नॉन लीनियर मॉडल सर। शिवम तो बोल रहे हैं लीनियर मॉडल है, कैसे? थोड़ा एक्सप्लेन करिए, नॉन लीनियर क्यों है? Can anybody explain that why this is a non-linear model? So because there are two variable in multiplication. As first of So all, this D, is the very basic answer is that two variables are there in multiplication. But second is the cos alpha, which is like this. Is it a linear function? It's non-linear. शिवम, क्या भाई आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं क्या आजकल? सर अभी पीछे का सर कवर कर रहे हैं सर, स्टार्टिंग से बिल्कुल। ये बेटा 11वीं तक कवर करने जाओगे क्या? ये 10वीं 11वीं के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा रहे हैं। कल आपसे कोई पूछ ले साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 क्यों होता है, इसको प्रूव करिए, तो क्या आप कह दोगे कि अभी रिवीजन करना है? So it is a linear function. For non-linear function आप कैसे अप्रोच करते हैं? सिग्मा yy Jacobian sigma xx Jacobian transpose. This is your approach. We have seen the derivation also, but there is no need to again derivate it. Just know the basic. This is the way you should start. Now you know the function. H is equal to d cos alpha. How many variables are there? Rahul, बताइए, how many variables are there in this function, mathematical model? Sir, 2. D and Good. theta. Good. D and alpha, not theta. Okay. Yes, sir. There are two are variables, D and alpha. Very good. What is the output dimension? Sir, H distance. Dimension. I'm not talking about the variable. I'm talking about the Sir. dimension. Sir, linear. बेटा डायमेंशन मतलब मैट्रिक्स डायमेंशन। इधर जो आपका फंक्शन है वो कितने वेरिएबल का है? ओनली वन, एज यू सेड ना, देयर आर टू वेरिएबल्स or two observables d and alpha. How many parameters? One parameters. That means only one. Okay. तो अब आप मुझे बताइए, ये मैट्रिक्स में लिखने जा रहा हूँ, सिग्मा एच एच इज इक्वल टू जैकोबियन सिग्मा डी अल्फा Jacobian transpose, because I have replaced the necessary conversion. xx would become d alpha, yy would become hh. अब मुझे डायमेंशन बताइए जरा, अभिजीत जरा डायमेंशन बताइए इसमें, जहां मैं फिल इन द ब्लैंक्स बना रहा हूं वहां पर आपको डायमेंशन भरनी है। बताइए।
लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ सिग्मा एच एच? सर 2. रॉन्ग. व्हाई 2? सर 1 1 1 सॉरी ठीक है, चल रहा है. सर 1 साथ आएगा. थोड़ी खेलना है. Why 1? सर जैकोबियन एक ही फंक्शन का निकालेंगे ना, तो लेफ्ट में भी 1 होगा, राइट में भी 1 होगा. हम जैकोबियन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इधर की बात कर रहे हैं. इधर लेफ्ट. लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट एरो जहां से बन रहा है, इधर वाला. ये टर्म बताइए, ये वाला. यस. इसका डायमेंशन. नहीं सर, नहीं सर, दोनों डायमेंशन बराबर होंगे ना, लेफ्ट राइट. अरे तो इधर की तो बताओ बेटा, राइट तो बाद में जाओ, पहले लेफ्ट की. अरुण साहनी, आप बताइए. सर 2 डायमेंशन. क्यों 2 क्यों? अच्छा पहले छोड़िए, ये बताइए. मेरा क्वेश्चन दूसरा. अब दूसरा क्वेश्चन. अब ये नहीं पूछ रहा जो मैं अभी पूछ रहा था. मुझे ये बताइए, इसके कंपोनेंट क्या हैं? जरा इसके कंपोनेंट बताइए. इसके कंपोनेंट डी कॉस अल्फा. इसके कंपोनेंट डी कॉस अल्फा होंगे. ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल इट? समेशन. यार आप लोग क्लास में क्या कर रहे हो? अरुण आप सीरियस नहीं है क्लास में बिल्कुल भी. सर कोवेरिएंस. सॉरी सर, स्टार्टिंग में मैंने बताया. सर कोवेरिएंस. स्टार्टिंग बस स्टार्ट करते वक्त मैंने बताया. सर इसे कोवेरिएंस बोलते हैं सर. इसे कोवेरिएंस भी नहीं बोलते हैं. शिवम बताइए, इसे क्या बोलते हैं? समेशन एच एच. भाई साहब हद है. वेरिएंस कोवेरिएंस. आलोक बताइए ने क्या बोलते हैं इसे? तो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स. यार शिवम आप लोग क्लास में नहीं हो तो मत अटेंड करो भाई. अगर आप सीरियस नहीं है तो व्हाई यू आर अटेंडिंग इट? अभी आपको मैंने बेसिक समरी प्रेजेंट कर रहे थे, तभी मैंने आपको बताया वी कॉल दिस एज ए वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स. इवन साइन भी ये बताया आपको कि समेशन का साइन नहीं है. दिस इज वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स. दिस इज वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स. अब मुझे बताइए, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स के कंपोनेंट क्या है? यशोवर्धन बताइए. तो सिग्मा डी एंड सिग्मा अल्फा. किधर होंगे, इधर होंगे या उधर होंगे? मैं इसका पूछ रहा हूँ, इसका. तो लेफ्ट हैंड सर. हाँ लेफ्ट का बताइए, इसके कंपोनेंट क्या होंगे? तो सिग्मा डी सिग्मा अल्फा. गलत.
जब सिग्मा डी अल्फा यहां लिखा है तो इसके कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे? आर यू डम? If sigma d alpha is written on this side, then how can the sigma d and sigma alpha be component of sigma hh? Vali Shetty, बताइए, what would be the component of sigma hh? Sigma DD. No. Why sigma dd? In previous problem, when you solved, you wrote the component of sigma xp yp as Squares of variance. have you written like that or not? Yes, sir. Then why you are telling in this case it would be sigma dd? Why? It would be sigma h square. When Abhijit told the dimension is 1 cross 1, that means it is only sigma h square is there. Has there be any variable h1, h2, h3, h4, then there will be a possibility of having sigma h1 square, sigma h2 square. But since there is only h, if the dimension is 1 cross 1, there will be only one component. Is it clear or not? Yes, sir. Good. On the right hand side, you have Jacobians. Now, tell me what would be the size of first Jacobian? J. Whenever a Jacobian comes, you should immediately form such kind of matrix. Number of variable, number of function. बताइए आलोक. सिंगल वेरी 1 cross 2. वेरिएबल 1 cross 2 because there are two variables, D and alpha, which Rahul told. There are two variables, D and alpha. So on the right hand side, you will move towards variable. On the column side, you will go with the function. There is only one function. H is equal to D cos alpha. That's it. There is no other function. So it would be 1 cross 2. Correspondingly, Jacobian transpose would become 2 cross 2, 2 cross 1. Then you need to tell me, Shivam, you need to tell me what is the dimension of sigma d alpha. Sir, 2 into 2. 2 into 2. Why? Because sir, there is two variables. There are two variables. Okay. D and alpha. तो कंपोनेंट भी बताइए. चलिए, वेरी गुड अटेम्प्टेड. तो आप कंपोनेंट भी बताइए.
sigma d square Good, good, very good. Next. sigma sigma d sigma alpha. No, no, no. There will be not. There will be no two sigma. Only one sigma that represent covariance, and Sir, you will write sigma d alpha. जी sir, sigma d alpha, Good, good, good. sigma Next. alpha d, Yes, very nice, very nice. sigma alpha square. Yes, very good, very good. Now see, the moment I call everyone by name, now you see your attentiveness. You are following every content. Otherwise, you will be just listening like a theory class is going on. No, this is not. So the function would be sigma d alpha square, sigma d alpha, sigma alpha d, and sigma alpha square. That's it. Very good. Very nice. Now, left hand side matrix 1 cross 1, then followed by 1 cross 2, 2 cross 2, 2 cross 1. अब आप देखिए automatically when you multiply it, it would become 1 cross 1. Left dimension of left hand side and right hand side would become equal after multiplication. Bhagat. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Is it clear now? Yes, sir. Sunil Kumar. You are not audible. Unmute yourself. Yes, speak aloud. Rejoin. Raveen Kumar. Yes, sir. Are you following it or not? Yes, sir. तो बताइए, सॉल्यूशन करके दीजिए मुझे। जैकोबियन जरा बताइए क्या आएगा। ये तो जैकोबियन की डायमेंशन बता करी, मुझे जरा जैकोबियन बताइए जो 1 क्रॉस 2 का है वो क्या शेप लेगा। Sir, rectangle अरे रेक्टेंगल 1 cross. मुझे वैल्यू बताइए। रेक्टेंगुलर शेप नहीं पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं कंपोनेंट क्या होगा। वैल्यू बताइए। चलिए राहुल आप बताइए, इनके तो समझ में नहीं आ रहा, अभी थोड़ा समय लगेगा इनको। राहुल आप बताइए, when we are writing Jacobian, how do we write it? So पहला टर्म लिखेंगे cos अल्फा और दूसरा लिखेंगे माइनस डी sin अल्फा। अरे थोड़ा समझाओ तो और लोगों को भी समझ में आएगा। सो फास्ट बताओगे तो कैसे काम चलेगा। फर्स्ट कंपोनेंट बताइए। सर 1 क्रॉस 2 है तो सर पहला जैसे लिखेंगे कि सर डेल एच अपॉन डेल डी सर, डेल एच अपॉन डेल डी, एंड दूसरा सर डेल एच अपॉन डेल थीटा सर, डेल अल्फा। Del alpha. यस Very सर। nice. See, on we have one function, so we are only following one function. How many variable? 2 variables. So we written 1 cross 2. But this is half done. Full done would be value of variables at d is equal to at alpha is equal to। तो d की वैल्यू जो भी हमने दी आपको 1000 फीट और अल्फा की जो भी वैल्यू दी है 3 डिग्री, जब आप उसे पुट इन करेंगे तब आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट वुड बिकम योर एक्चुअल जैकोबियन। तो डेल एच बाई डेल डी। यशोवर्धन बताइए, फंक्शन को
विद रिस्पेक्ट टू डी आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला आपको? माइनस साइन अल्फा सर, माइनस साइन अल्फा डी के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट कंपोनेंट बताइए। हेलो सर। वेट, यशोवर्धन, फर्स्ट कंपोनेंट बताइए। What will be the first component? तो माइनस साइन अल्फा। यार तुम्हें पार्शियल डेरिवेशन भी नहीं आता है क्या? सर कॉस हैं? सर कॉस अल्फा, सर कॉस अल्फा। फिर दूसरा सर माइनस टी साइन अल्फा। Okay, now you get this value after putting in your d is equal to 1000 feet and alpha is equal to 3 degree, and you know sigma d alpha. चलिए शिवम बताइए, सिग्मा डी अल्फा जो आपने कंप्यूट करवाया था उसकी वैल्यूज क्या क्या पुट इन होंगी, जरा बताइए। सर सिग्मा डी सिग्मा डी मैंने कितना बोला है? कितना बोला भाई? क्यों? अरे यार क्वेश्चन पढ़ो भाई। सिग्मा डी कितना बताया? सिग्मा डी 0.05 फीट। 0.05 फीट। तो बताइए पहला वैल्यू क्या होगी? सर 0.05। तो यहाँ वैल्यू क्या भरी जाएगी? 0.05 स्क्वायर। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ वैल्यू क्या भरी जाएगी? थोड़ा बताइए इसके बारे में। 1 सर, 1 स्क्वायर। क्यों 1? अभी मैंने सर आपसे क्या बोला? अभी मैंने क्या बोला आपसे? सिग्मा अल्फा की वैल्यू सर 1। नो, रॉन्ग। आलोक बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा अल्फा? 1 मिनट। तो 1/60। नो, मतलब इस डिग्री में से again you are doing the same wrong, same mistake. सॉरी सर, π/3। Why you are going with pi or something like that? You simply write pi by 180. You know what is pi? 3.14. सर उसके बाद डिग्री में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/3 हो जाएगा। तो पूरा कंप्लीट करो ना उसे। ओके। फर्स्ट you have the sigma alpha is 1 minute. You compute 1 minute, convert it to degree, then you degree to convert it to radian, then you put on this value. And then after you replace all these values in the function, then the sigma h would be plus minus 0.05. That's how you solve it. See, it took 15
20 minutes just to explain the different steps, which I was explaining in the last class also. But because you have been habitual of just listening to mathematics, that's why the problem is coming. You're not following the mathematics. See, mathematics is not just subject of history or geography which you can listen. You have to attempt it. You have to write down on your notebooks. Then only you will realize the mistakes you are committing. Now I'm giving another problem and I will not explain in this much detail. You have to tell me the solution. You have to estimate the volume of a rectangular tank. L is equal to 40 feet. Width 20 feet. Height 15 feet. Corresponding errors 0.05 feet, 0.03 feet, 0.02 feet. You have to give me the error in V, that is volume. चलिए, पहला स्टेप मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, दूसरा स्टेप लीनियर नॉन लीनियर वेरीफाई करेंगे, थर्ड स्टेप जैकोबियन बनाएंगे, फोर्थ स्टेप सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू जैकोबियन सिग्मा एक्स एक्स जैकोबियन ट्रांसपोज में पुट इन करेंगे डायमेंशंस. देन इंडिविजुअल जैकोबियन इवेल्युएट करेंगे, सिग्मा एक्स एक्स इवेल्युएट करेंगे एंड देन प्रोवाइड सॉल्यूशन. These are the 5 steps. चलिए करिए, बताइए मुझे.
Anyone having with the answers? Alok, Rahul, Abhijit. सॉल्व कर बस लास्ट स्टेप है. Okay. Okay. Good. Good. सर Wait. Let others also complete it. Okay. सर आंसर नहीं बता रहा हूँ सर. कुछ बच्चों के लिए क्लास पॉज हो चुकी है, मतलब नो ऑडियो नो वीडियो. No audio, no video. यस सर. If you are listening, then it should be fine. Why the others? Maybe because of the network issues. Should I reconnect? यस सर. Now is it okay? So for me it is right, and but it's Are they writing something in the chat box? No message in the chat box. Abhijit, Sunil, Rahul, are you listening? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then fine. यस सर. सर बहुत कट कट के आवाज आ रही है. Maybe your network is not good. भैया आंसर बताइए, अब समय हो गया. We'll start with the
भगत बताइए। यस सर। क्या सोल्यूशन है? सर लास्ट में ऐड कर रहे हैं, फ्यू सेकंड। आई गॉट अ 1 and 1 matrix. No, yes. So just adding in the values. Sorry, Answer say again. 24.6. 20 24.6. final solution Yes, sir. after taking square root. Yes, sir. $28. Hello, sir. Yes. Sir, I'm actually suffering from fever last 4 days. Oh my God. That's सर इसी वजह से सर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। कल क्लास की थी सर बट कुछ समझ नहीं आया था तो फिर सर आज नहीं अटेंड की मैंने। Take rest, take rest, take rest. Go ओके take सर, rest. थैंक यू सर। Answer is 28 feet cube. Sir, 24.6 feet आया। नहीं, गलत। Without square root कितना आया? 805. Yes, sir. Yes, sir. 605 sir. 805 sir. 805 जिनका आया वो सही है। Yes sir. 28.37. But Yes, what sir. is more important to me is if you are doing it by Jacobian or doing by normal method. Those who are solving it and got 805, how they are doing it? Please tell me. Jacobians. Rahul, बताइए. Yes sir, Jacobian sir. Yeah, that's good. That's good. So Jacobian is the way towards the solving critical problems, because you cannot every time look for simple or basic model of one dimensional, which is generally being avoided. Okay, that's good. Any problem so far, to any of you, this is the very nice time to ask. I will explain it again because this is the last example. Before that, the next example would be given as an assignment. हेलो सर। हाँ, सर वो यूनिट जो चेंज कर रहे थे केवल सिग्मा एक्स एक्स में चेंज करेंगे कि सब में करेंगे? जैकोबियन में करेंगे कि नहीं सर? why you change unit in when you see the all three units are linear units. If they are given in feet, no problem. They are given in meters, no problem. The problem is when the angular information is coming into the picture. You get my point? यस सर। So, hello. Yes. So I've got 52.773. No. Wrong. See, the partial derivative, first partial derivative is 300, second partial derivative is 600, third partial derivative is 800. Yes sir, I've Multiplied got. by corresponding. Yes. Yes, sir, that is correct. I have got that. Till there it is correct, sir. See, now what I am showing on the screen must be visible to all of you. Is it? Yes sir. This is the standard way of solving this problem. This was the problem which I have given you. See, this was the problem. Okay, but the standard way of doing it, this one. But see how you have done it. You have done it through Jacobians, which is the future. I mean, if you any problem is coming to you in regarding so-called, what should I say, regarding any
non-linear, linear, whatever it is. You have the Jacobians with you. If you are trying to arrange it, you're trying to get the matrix dimension very clearly, no need to remember anything. You just start working it. In fact, from your mind only, you can thought of different problems, and you can solve it. And see the previous problem which I have given you. This one. This was the problem of yesterday on the previous class. The x is equal to x naught plus d sine beta, y is equal to y naught plus d cos beta. You get the xy, that's no problem, because this is not the objective of this class to find out what is x and what is y. The objective of this class is to find out the variations, the deviations. And in order to find out those deviation and variation, we can write it like that. Although there is a correction in this slide, that's why I haven't shown you, because we cannot directly use 9. Get my point? We cannot directly use 9. This is not correct, because it has to be converted to alok. It has to be converted to radians. Get my point? Am I audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you see why I haven't shown you the solution, because you would be confused that why 9 is used. But now you are very much clear. Okay, 9 cannot be here. It should be converted to radians first. Okay? Is it clear? Yes, sir. अभी भी किसी को डाउट है तो पूछिए. If anyone has doubt, you can ask. Because if you now know the mathematical model, that is steps which I was telling you, if you have the mathematical model, you can write it down. That's fine. The moment you have mathematical model, you can see whether it is a linear, non-linear. That is fine. Then you need to find out the Jacobian. And Jacobian, for Jacobian, this is the way you should form the Jacobian. Function, variable. If you write like this, there is no way you get the wrong matrix. You see, now number of function available, 1, 2, 3, 4, 5, 7, whatever it is. If it is 1, simple 1. The number of variable in this problem, you have 3 variables, L, W, and H. You simply write 3. The answer of the Jacobian would be 1 cross 3. Then you should have enough confidence in writing the left hand side variance covariance matrix as well as the right hand side variance covariance matrix, which is in this case, and in the left hand side it is simply Valley Shetty. Are you getting? So with this, the assignment which I am going to upload is that the chapter 6, you have to solve the examples from your methods. Please remember, I am telling you that do not follow the books method. Please remember that you have to follow this Jacobian method, and I'll see and ensure that
I will not accept any uploads that is solved through books, a way of doing that. You have to follow the same concept which you have just learned here. And chapter 6 of Mikhail and Gracie, you have to do it, the examples. The Tuesday is the deadline. On the coming Tuesday, you have to submit the assignment. And this is the high time you should devote your next 2-3 days to finish this assignment, because the more you practice, the more you get confidence. Okay, so chapter 6 will be uploaded as assignment for completing the exercises as well as examples. Chapter 6 of the so-called Mikhail and Gracie book is on variance and covariance propagation. That's it. Okay. Yes, sir. Okay, sir. But still, I'm still in doubt that you all have followed or not, because objective is that very simply you write mathematical model. Very simply you should understand what you are forming in terms of matrices, in terms of its dimension, whether it is equal. See, the first critical point is you validate the matrix dimension from both sides. If you do not do that, what will happen? Later on you will realize, okay, you got the wrong answer because you missed one partial derivative which should have been there. So that's why you ask to yourself number of variables or number of observables. So if I again just quickly revise you through the content part. So any problem that comes to you, any problem, what you first took? The number of observable. Observable means the problem is given certain observation to certain to solve the problem. That observation which contains error is observables. Second, the function. How many functions you have to form? Let's say in that previous problem of horizontal distance, vertical angle, distance DAB, this problem, not only I've asked about h, I have also about t. So what you will write? H is equal to d cos beta, t is equal to d sine beta. And if I have asked you, give me sigma h square, sigma t square, sigma ht, sigma t, sigma ht and sigma ht, you would have been combined the ht. Instead of writing hh, you would have written ht. You got the point? See, you have to form two functions, 1 and 2. But in that case, I have only asked one, this one. That's why you have written only one function. Rest is same. So with this, we'll end here, and we'll see you on next class.